स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक पे हमने मैचिंग ऑफ इम्पीडेंस को डिस्कस किया और इस टॉपिक के एंड में एक एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कि इफ़ light enters from air into a lens which is made up of glass material, then we want to avoid the reflection from this glass lens. So we coat this glass lens with a semiconductor material. So this problem is related to that example. So the statement of the problem is that the relation between the impedance C and the refractive index N of a dielectric is given by. तो हमें रिलेशन गिवन है, ठीक है, Z इम्पीडेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान। ठीक है, जब हम लाइट की बात करेंगे और लाइट जब एयर से ग्लास में एंटर होगी तो हम इम्पीडेंस में के टर्म्स में बात नहीं करेंगे, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में बात करेंगे। तो इन दोनों का जो रिलेशन होगा डेट वुड बी Z इक्वल्स 1/n. So light is traveling in free space, enters a glass lens which has a refractive index 1.5 for a free space wavelength of. So हमें lambda given है light का, so that is 5.5 into 10 to the power minus 7 meters. So show that the reflection at this wavelength are avoided by the coating of refractive index and with this thickness. ओके, हमने ये इसमें ये फाइंड करना है कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एक मटेरियल का या किसी भी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का 1.22 हो और उसकी अगर हम ग्लास लेंस के ऊपर अगर कोटिंग करें तो रिफ्लेक्शन उससे अवॉइड की जा सकती है और उसकी थिकनेस जो है ये भी हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो फ्री स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 होता है, ठीक है, और ग्लास का यहाँ पे गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो और हमने जैसे हमने उस टॉपिक में डिस्कस किया था कि Z1 और Z3 को हम जॉइंट बनाना चाह रहे हैं, सो वी इंसर्टेड अ पोर्शन ऑफ Z2 और Z2 की हमने लेंथ फाइंड की थी और Z2 फाइंड किया था, ठीक है। तो हमने लेंथ का कहा था डेट शुड बी अ क्वार्टर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो और Z2 उसमें हमने कहा था क्या होना चाहिए, डेट्स द हार्मोनिक मीन ऑफ Z1 एंड Z3, तो Z1 Z3 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो वहीं से हम आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो फार्मूला है हमारे पास, यहाँ पे हम जो मटेरियल हमने इंसर्ट करना है, ठीक है, उसके वो एक कोट करना है, हमने उसकी कोटिंग करनी है। तो Z ऑफ द कोटिंग मटेरियल वुड बी सो Z एयर एंड Z लेंस, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे Z2 इक्वल्स Z1 एंड Z3, ठीक है। तो इसमें अगर वैल्यूज पुट करें, अच्छा तो इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इम्पीडेंस इक्वल्स टू 1/n। तो अगर इसमें अगर पुट करें तो डेट वुड बी n air, refractive index of air and refractive index of lens, and that's my square root. Okay, so if I will find n coat, so from this I can find n coat would be 1/Z coat. So if I will take the reciprocal of this, so it would be n lens, sorry, it's n air and n lens. So if I will put the value, so I know that the refractive index of air is 1 and lens is 1.5. So if I will take the square root of 1.5, so it would be equal to 1.22. So that's the first part which we have found. Okay, and we also need to find the thickness, how much should be the thickness of this coating. So we know that that's क्वार्टर वेवलेंथ लेंथ जो हमने फाइंड की थी, उस क्वार्टर वेवलेंथ हमने कहा था कि
So the thickness would be d by lambda by 4 n coating. So if I will put the values here, so lambda, I know that lambda is 5.5 into 10 to the power minus 7 and 4 multiplied by 1.22. So I will get my required answer, which is 1.12 into 10 to the power minus 7 meters. स्टूडेंट्स, आपकी बुक का एक और एक्सरसाइज प्रॉब्लम है. सो ए ट्रांसवर्स हार्मोनिक फोर्स ऑफ peak value 0.3 Newton and frequency 5 Hz initiates waves of amplitude 0.1 meter at one end of a very long string of linear density 0.01 kilogram per meter. Show that the rate of energy transfer along this string is 3 pi by 20 watts and that the wave velocity is 30 by pi meter per second. ओके, तो आपको डेटा गिवन है, ठीक है. आपको मैक्सिमम फोर्स की पीक वैल्यू गिवन है, ठीक है. एफ मैक्सिमम आपको गिवन है विच इज 0.3 न्यूटन. फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, ठीक है. फ्रीक्वेंसी को ओके आई डिनोट इट बाय एफ and that is 5 Hz. From this value I can calculate the value of omega. Omega I know 2 pi f. Okay, and linear density is of the string is given, so linear density is 0.01 kilogram per meter and we need to find the power. So rate of energy transfer हमने फाइंड करना है और द वेव वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है. सो हमें ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी गिवन है, ठीक है, और डेट इज 0.1 मीटर्स. ओके, सो हमने जैसे कि एक टॉपिक में इस चैप्टर में पढ़ा है कि रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर equals along the string, that's equals the wave velocity times the energy. Okay, तो energy times the wave velocity. So इसको हम लिखते हैं energy times velocity of the wave. So that would be equal to 1/2 rho omega square a square and c, and I'll label it as equation number 1. Okay, I know that f maximum would be t partial. ट्रांसवर्स फोर्स को हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किया कि ट्रांसवर्स फोर्स को हम इससे t इंटू पार्शल y बाई पार्शल x लिख सकते हैं, और if force is maximum, so I can write it also maximum. Okay, I will differentiate y. So I suppose y here t into partial over partial x. Okay, and I suppose that my function here is displacement function is a sine of omega t minus kx. Okay, and so that's I want to find the maximum value of this. So if I will differentiate this function with respect to x, so I will get t a, and from this factor I will get k, and if I will differentiate sine function, it would be cos of omega t minus kx. Okay, so if it's maximum, so its maximum value is 1. Okay, and it's so I have considered it as 1, so I will be left with f maximum equals t a k, and
I can further put the value of k. So value of k would be omega over c. I know that omega equals c times k, so I use this value here. Okay, and I also know that so if I can rearrange this equation, T by C would be equal to F maximum divided by A omega. Okay, and T by C I know that equals rho C, because T by C equals rho times C, so I can put the value of rho times C. Okay, and that would be equal to X maximum, so I can label it as equation number 2. Now I can use this value of rho C in my equation number 1. Okay, so then I will get the rate of energy transfer so that will be equal to 1 by 2 rho C omega square A square. So I have rewritten the equation number 1, and then I can put the value of rho C in this equation, so I will get 1 by 2 so F maximum divided by A omega into omega square and A square. So this would be cancelled with this one, and I will be left with 1 by 2 into F maximum and omega and A. So here I know the values of my peak force. Peak value of the force is given, that is 0.3 Newton, and omega I know, so okay, I can put it here 1 by 2 peak value of force 0.3 Newton. Omega I know, that's 2 pi F. 2 pi into F is given, which is 5. Okay, and then amplitude is also given, that's 0.1. So if I will put these values, so I will get 3 pi by 20 watts. Okay, okay, so that I will get. So that was the first part which I needed to find, and in the second part I also need to find the velocity of this wave. So from equation 1 I can also find the velocity. Velocity here is c. So from now I know the value of the rate of energy transfer, so I can put all these values in this equation and I can find the value of c. Okay, so c I will find c from here. So from equation 1 I can write that it would be 2 and if I rate of energy transfer, if I write it by P and rho omega square A square. So if I will put the values here, P value I know that 3 pi by 20 and rho is 0.01 and omega square is 2 pi into 5 and that square, and then I have 0.1 square amplitude. So in this way I will get my required answer 30 by pi meter per second.